बच्चों, so let's read this question. A compound in gaseous state is present in a rigid container at 300 Kelvin and 1 atm atmospheric pressure, which is if temperature is increased to 600 Kelvin, it dissociates into B in gaseous state and C in gaseous state as well. As A in gaseous state changes to B in gaseous state plus C in gaseous state and its dissociation is 50%. हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर इन कंटेनर. हमारा कंटेनर किस टाइप का है? इट इज अ रिजिड कंटेनर. So option A is given to us as 1.5 atm, B is given to us as 3 atm, C is given to us as 2 atm, and D is given to us as 1 atm. Now let us talk about the key concept of the question. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें पता है हमारा जो PV होता है इट इज इक्वल्स टू nRT. So P over here is pressure, V over here is volume, N over here is number or we can say amount of substance, और जो हमारा R होता है it is an ideal gas constant, and T is equals to temperature. So what is this? This is the formula for our ideal gas law. So ideal gas law is the product of pressure and the volume of 1 gram of molecule of an ideal gas. It says that it is equals to the product of absolute temperature of the gas and the universal gas constant. So that is what our ideal gas law states. Now let us start solving this question. तो हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप हमारा होगा what is the initial, let us write the initial conditions. तो initial pressure of A compound in gaseous state at 300 Kelvin at 1 atm in a rigid container, ये हमें दिया हुआ है, and then upon heating हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 600 केल्विन को, एंड ए डिसोसिएट्स इनटू बी इन गैसियस स्टेट प्लस सी इन गैसियस स्टेट. सो अगर हम डिसोसिएशन की डिटेल्स को करें, हम वी विल लेट द इनिशियल मोल्स ऑफ ए बी एन. तो हमारे को एट 50% डिसोसिएशन, जब हमारी 50% डिसोसिएशन हो जाएगी तो इट वुड बी 0.5 n dissociation. So it would be 0.5 n moles of A will remain. तो इससे क्या होगा हमारा, और 0.5 मोल्स और 0.5 n मोल्स हमारे A के डिसोसिएट हो जाएंगे, मोल्स ऑफ A डिसोसिएट्स. तो अगर हम बात करें, therefore अगर हमारे 0.5 मोल्स ऑफ A होंगे और 0.5 n मोल्स ऑफ A होंगे तो हमारे 0.5 n मोल्स ऑफ B भी होगा, बिकॉज वी कैन सी अगर जब हमारा n मोल ऑफ A होगा तो n मोल ऑफ B एंड n मोल ऑफ C में डिसोसिएट होगा वो. तो सिमिलरली 0.5 n मोल्स ऑफ B होगा एंड C भी 0.5 n मोल्स होगा. सो हमारे टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? Total moles after dissociation 0.5 n plus 0.5 n plus 0.5 n, which is equals to 1.5 n. So that those are the total moles after dissociation. Now अगर हम pressure relationship हमने अभी पढ़ा that since the container is a rigid container and the temperature is increased to 600 Kelvin, which is almost double the initial temperature. तो हम ideal gas law का use करेंगे यहाँ पे. So the pressure P1V is equals to nRT1 and P2V is equals to, और जब हमारे n moles थे राइट, तो हमारे उसके बाद कितने होंगे? 1.5 n हो गए, 1.5 n RT2 number of moles
हमारे 1.5 हो गए, राइट, आफ्टर डिसोसिएशन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देयरफॉर वी कैन सी दैट से दैट जो हमारा P2 डिवाइडेड बाय, अगर हम दोनों का रेशियो निकालें P2 डिवाइडेड बाय P1, इट वुड बी इक्वल्स टू 1.5 n RT1 divided by nRT1, so that would be equals to 1.5 multiplied by, यहाँ से nr cancel हो जाएगा, so RT1, sorry, RT2, this would be RT2. In numerator it would be RT2 and in denominator it would be RT1 multiplied by T2 divided by T1. तो हमें T2 की यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 600 केल्विन, एंड T1 की वैल्यू हमें भी यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे क्या थी, टेम्परेचर की वैल्यू विच इज 300 केल्विन। तो हम यहाँ से T2 डिवाइडेड बाई T1 निकाल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 300 क्या होता है हमारा, इट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारी P2 डिवाइडेड बाय, इनिशियली हमारे को कितना प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियली वी हैव बीन गिवन द प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे P1 की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमारी P2 की यहाँ से वैल्यू आ जाती है 3 atm। So therefore, the total pressure in the container after the dissociation of our compound A is equals to 3 atm. So हमारा option number B will be the right answer to the question which says 3 atm. I hope you understood the question well. Best of luck.